premature aging, active acne and acne marks, dull skin, uneven skin tone, hyperpigmentation. What if I tell you for all these problems there's only one solution, and that is sunscreen. It is 2023 and it's high time that we all understand the importance of sunscreen. I still see people around me who does not apply sunscreen and do not try to even understand how crucial sunscreen is for their skincare routine. Well, in today's video I'm going to be rating all Dermaco sunscreens that I have. I think they have 7-8 sunscreen in the market, but I have 5 of them. So I'm gonna rate and review all those sunscreens according to my experience and how I feel about those sunscreens, and if you really put your hard-earned money in these sunscreens or not. But before we begin, let's talk about sunscreens briefly for the people who does not know what sunscreen actually does and anything about sunscreen, to be very honest. So there are multiple types of formula when it comes to sunscreen available in the market. Sunscreen comes in cream form, powder form, spray form, serum form, also in stick form. But which one would be perfect for you would completely depend on your skin requirement and your skin concern. अब अगर हम बात करें कि सनस्क्रीन्स के क्या फायदे होंगे, तो शॉर्ट टर्म गोल्स यू कैन से कि आपकी स्किन को वो सन डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा, तो आपकी स्किन पे टैनिंग नहीं होगी, आपकी स्किन इवन टोन होगी, हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगा. बट इफ यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म गोल्स, रोज सनस्क्रीन यूज करने से इट्स गोना हेल्प यू विद एंटी एजिंग बेनिफिट्स. और एजिंग के साइंस क्या होते हैं? फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, राइट? वी गेट फाइन लाइन्स हियर ऑन आवर फोरहेड, स्माइल लाइन्स, यू नो, दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाती है इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर स्किन रियली नाइसली. बट सनस्क्रीन इज गोना हेल्प यू विद दैट एज वेल. सो दैट वाज ऑल अबाउट अ सनस्क्रीन. इफ़ यू आर अ बिगिनर, आई होप वो हेल्पफुल होगा अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है कि सनस्क्रीन क्या करती है स्किन के लिए. बट नाउ लेट्स बिगिन with the sunscreens and I'm gonna rate all those sunscreens. I'm gonna show you the texture and everything. So let's begin with the first one. So the first sunscreen is 1% of hyaluronic acid Aqua gel sunscreen. This has SPF of 50 PA++++. Oh, I completely forgot to mention, how do you like आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा सनस्क्रीन चाहिए और आपकी स्किन को वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है. सो टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम UVA rays, you want to check a sunscreen with PA+ value. So this has PA+4, like plus, so it's amazing. And for UVB rays you want to check the SPF, or this has SPF of 50, so it is great. I think I'm not going to talk about this particular sunscreen a lot because I think I recommend this sunscreen so much on my channel. Like in every other video of mine I talk about this sunscreen because this is so beautiful. This is so amazing. This has 1% of hyaluronic acid, which makes it supremely hydrating. This sunscreen is best for all skin type. You do not need to think twice whether you want to get this sunscreen, because it's going to work for all skin type, be it oily, normal, dry, combination. And also this works in all seasons, trust me, because I have used this sunscreen for more than 1.5 years, and I've used this sunscreen during summers, winters, monsoon, like every single season, and ये सब seasons में मुझे बहुत अच्छे से मेरे लिए work करती है. So yeah, this is very lightweight, quick absorbing, no white cast, no peeling whatsoever. ना बहुत लोगों का ये issue होता है कि sunscreen हमें रोज लगानी होती है, but quantity बहुत कम आती है. Generally sunscreens की जो quantity होती है वो होती है 50 ग्राम with most of the brands. But I'm really happy to say that Dermaco ने इसी sunscreen का bigger packaging भी launch किया है. So this is 50 gram of the product what you're gonna get in this particular one, but they have launched the bigger one and the same formula and everything is same, but in this one you're gonna get 80 gram of product, which is gonna last you quite some time, like about 1.5 months. So that is really important because हमें sunscreen रोज लगानी होती है, generous amount लगाना होता है, right? So we need more amount when it comes to a sunscreen. Love this sunscreen, amazing. This is fragrance free, very lightweight, amazing for sensitive skin as well. I highly recommend this one and I would rate this one 10 out of 10. Now let's talk about their recently launched sunscreen, which I got to try last month, and this is the Mattifying 100% mineral powder sunscreen, and this has SPF of 50 PA++++. Now this is the powder sunscreen right here that you see. This is the powder. I hope you can see it is moving, right? So this is the powder, and when you just open the cap, that's how you want to apply your sunscreen. I hope you can see ये थोड़ा powder इसमें से बाहर आ रहा है, and all you want to do, you just want to swirl this sunscreen all over your face. And it is going to be giving you so much of protection from sun rays. So yeah, that is great. Now if we talk about my experience with this sunscreen, I would say I'm really happy with this sunscreen, and the timing of the launch for this one is perfect because abhi summer start hone wala hai and we do not want that greasiness or oiliness on our face. We want our skin to look really
not matte, but just very not sticky, not chip, not oily, right? And normally sunscreen बहुत heavy feel होते हैं स्किन के ऊपर, and if you wanna apply that every 3 to 4 hours तो स्किन बहुत चिप फील होने लगती है. सो या दिस इज द प्रोडक्ट विच इज गोना कम सो हैंडी फॉर समर सीजन. अब मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहती हूँ कि ये सनस्क्रीन आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करेगी. इफ़ यू थिंक कि आप अपनी नॉर्मल क्रीम बेस्ड या सिरम बेस्ड सनस्क्रीन को डिच करके सिर्फ ये सनस्क्रीन यूज़ करोगे तो नो. जब हम नॉर्मल कोई सिरम या फिर कोई क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाते हैं, सो वी यूज़ लाइक प्रॉपर 3 finger रूल, लाइक वी फॉलो दैट. हम प्रॉपर जेनरस अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन लगाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू पाउडर वी कैन नॉट पुट दैट मच पाउडर ऑन आवर फेस, और ऑफ कोर्स वो लगेगा भी नहीं फेस पे, राइट? सो दिस सनस्क्रीन इज परफेक्ट फॉर योर टचअप्स, योर ऑन द गो, बट डू नॉट डिच योर रेगुलर सनस्क्रीन फॉर दिस वन. सो आई रियली लाइक दिस सनस्क्रीन, स्पेशली इफ यू हैव ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है ये सनस्क्रीन. एंड इफ यू आर समवन हु वेयर्स मेकअप अ लॉट, तो उसके ऊपर ये क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है. पूरा मेकअप ग्रीसी हो जाता है, चिप हो जाता है, पूरा मेकअप मूव कर देती है इस तरीके की सनस्क्रीन. सो या फॉर दैट पर्पज यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सनस्क्रीन. आई लव दिस सनस्क्रीन फॉर माई ट्रैवलिंग पर्पज एंड फॉर माई ऑन द गो टच अप. सो या आई वुड गिव दिस वन अ गुड 9 out of 10. So next sunscreen that I have is the one जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी जब ये लॉन्च हुई थी. सो दिस इज द 1% of hyaluronic acid tinted sunscreen, and this one comes with SPF of 60 PA++++. आई थिंक सभी डर्माको की सनस्क्रीन में सबसे ज़्यादा SPF इसी में, बाकी सब SPF of 50 के साथ आती है, बट ये वाली SPF of 60 के साथ आती है. एंड दिस वन इज एक्चुअली अ फिजिकल सनस्क्रीन. सो फिजिकल सनस्क्रीन के साथ क्या होता है कि वो थोड़ा वाइट कास्ट आपके स्किन के ऊपर छोड़ देती है, क्योंकि वो एक लेयर क्रिएट कर रही है, राइट? प्रोटेक्टिव लेयर, तो वो थोड़ा दिखता है स्किन के ऊपर. सो या दिस वन इज अ फिजिकल सनस्क्रीन. दिस हैज जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो हाइलुरोनिक एसिड. इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस विद दिस सनस्क्रीन, आई वुड से I am not a hugest fan of this sunscreen. Now the protection is amazing, right? This has SPF of 60, so that is great. But because of this is a physical sunscreen, and I feel that this leaves a little bit of white cast. Although this is a tinted sunscreen and this has a little bit of that brown color in it, but when you blend this on your skin, this kind of leave a little bit of cast on your skin, which I personally not like that much, but after a few minutes it kind of gets settled on your skin. But I would still say that I don't use this for my everyday use. I personally like to use this sunscreen जब मुझे कभी बाहर जाना है and I do not feel like applying makeup, but I want मेरी skin थोड़ी सी even tone हो, जो डार्क सर्कल्स हैं या hyperpigmentation है, जो भी थोड़े बहुत मार्क्स हैं वो थोड़े even out हो जाएं, तब मैं ये वाली सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ. जो वाइट कास्ट के लिए मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही स्किन के ऊपर रहता है. उसके बाद में ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और काफ़ी इवन टोन देती है स्किन को. तो अगर तुम्हें मेकअप करना नहीं पसंद और तुम ऑफिस गोइंग लेडी हो, या फिर तुम्हें कॉलेज जाना है और तुमको मेकअप में इन्वेस्ट नहीं करना, यू वांट समथिंग जो तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करे, इवन टोन स्किन भी दे, एंड तुम्हें ऐसा दिखाए कि यू पुट सम एफर्ट इन लुकिंग द वे यू आर लुकिंग, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस सनस्क्रीन. दिस अगेन has no fragrance. Yeah, this doesn't has fragrance. I really appreciate the fact that this sunscreen does not have any fragrance, so it's perfect for all skin type. Like even if you have sensitive skin, आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करने वाली है ये सनस्क्रीन. द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इज़ वेरी थिक, आई वुड से, एज कम्पेयर टू ऑल द अदर सनस्क्रीन. काफ़ी थिक है ये. और जो फील है सनस्क्रीन का, इट काइंड ऑफ फील्स लाइक मूजी, या फिर जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स आते हैं, इट फील्स लाइक दैट. जब आप इसको फेस पे अप्लाई करोगे और स्किन बिकम्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट. बट आई फील इफ़ यू हैव ड्राई पैचेस ऑन योर स्किन, तो ये उन ड्राई पैचेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्लिंग कर सकती है. दैट्स व्हाट आई फील. बट या आई डू नॉट हैव ड्राई पैचेस, टच वुड. बट आई फील अगर तुमको बहुत ड्राई पैचेस है फेस पे, तो तुम्हें पहले वो ड्राई पैचेस को ट्रीट करना पड़ेगा, तभी तुम इस सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हो. आई लाइक दिस सनस्क्रीन, बट दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. बट आई स्टिल वुड गिव दिस वन अ गुड 7 out of 10. सो जो नेक्स्ट सनस्क्रीन मेरे पास है वो है सनस्क्रीन जो सिरम फॉर्म में आती है डर्माको की, एंड दिस वन इज़ 1% ऑफ हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन. सो दिस हैज़ नाइसिनामाइड एज वेल इन SPF of 50 PA+++. अगेन दिस इज़ अ फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला. आई डू नॉट रिमेंबर इफ दिस इज़
fragrance free, but I cannot like really smell any fragrance. So yeah, I'd really say that this is fragrance free, and this retails for $499. You get 30 ml of the product, so this is the least amount of sunscreen that you're gonna get. बाकी सब sunscreen जो है वो 50 ग्राम है, बट ये वाली सिर्फ 30 ml है. बट आई थिंक सीरम में जब भी कोई सनस्क्रीन आती है वो 30 ml ही आती है. सो या थोड़ा कम क्वांटिटी तुम्हें मिलने वाली है इस सनस्क्रीन के अंदर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्मूला एंड द फील ऑफ द सनस्क्रीन, आई वुड से अगर तुम ये सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो विंटर्स के टाइम पे, यू गोना एंजॉय दिस सनस्क्रीन अ लॉट. इसके अंदर नायासिनामाइड भी है, सो ये और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो जिंक ऑक्साइड और नायासिनामाइड है वो बहुत ही सूदिंग होता है स्किन के लिए. इफ़ यू हैव इन्फ्लेमेशन और तुम्हारी स्किन बहुत रेड होती है या बहुत जलती है, या फिर यू नो इफ़ यू स्क्रैच योर स्किन अ लॉट और तुम्हें कुछ सूदिंग चाहिए अपनी स्किन के लिए, और बाकी सब सनस्क्रीन तुम्हारी स्किन को और भी ज़्यादा इरिटेट करती है, तो ये वाली बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसके अंदर नायासिनामाइड है एंड जिंक ऑक्साइड भी है ऑफ कोर्स. तो बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज यू आर गोना गेट विद दिस सनस्क्रीन. नाउ अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ अबाउट दिस सनस्क्रीन, तो मुझे थोड़ा इशू हुआ इसको बहुत रेगुलर यूज़ करने में. उसका रीज़न ये है कि जब मैं इसको विंटर्स में लगाती हूँ तो ये काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी अच्छा फील करती है स्किन के ऊपर, बट जब मैं इसे समर्स में लगाती हूँ तो मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी बना देती है. एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है. ड्यूरिंग समर्स मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो जाती है, मतलब मेरा टी जोन थोड़ा ऑयली होता है, बट बाकी अदर पार्ट ऑफ माई फेस लाइक दिस पार्ट ऑफ माई फेस इज स्टिल ड्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट तब भी मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ऑयली कर देती है. एंड इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं करती हूँ ड्यूरिंग समर्स. सो आई वुड से इफ़ यू हैव ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन, यू वांट टू ditch this sunscreen. You do not want to get this one during summers. During winters you would enjoy this one, but during summers I just do not. The formula is amazing and I feel ये winters में बहुत different feel होती है स्किन के ऊपर, but summers में this feels heavy. The consistency is very light और बहुत easily absorb हो जाती है, and कोई white cast भी नहीं है. बट मुझे बस यही इशू है कि ये समर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा चिपचिप फील होती है एंड हैवी फील होती है स्किन के ऊपर, एंड आई जस्ट कैन नॉट यूज़ दिस ड्यूरिंग समर्स. एंड मुझे जब ड्राई स्किन है तो कोई ऑयली स्किन वाला इंसान तो इसको यूज़ कर ही नहीं सकता. दैट्स व्हाट आई फील. अगर तुम्हारा कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है इस सनस्क्रीन के साथ में तो डेफिनेटली शेयर दैट इन कॉमेंट्स और हेल्प करना बाकी लोगों को भी. ये मेरी स्किन के साथ ऐसा हुआ, हो सकता है किसी और के साथ ऐसा ना हो, बट या दैट्स वाई आई पर्सनली लाइक टू यूज़ दिस ड्यूरिंग विंटर्स नॉट समर्स. एंड ह्यूमिड weather में तो it's a big no, but I like the formula and that's why I'm gonna give this a good 6 out of 10. Okay, I'm left with only one sunscreen and this is the one. So this is the Pore Minimizing Priming Sunscreen. This has SPF of 50 PA+++. So this again has 4% of niacinamide, which is amazing. So this sunscreen is supposed to work for you for your open pores. Of course UV and UV protection तो definitely मिल ही रहा है. अब मैं अगर इसके formula की बात करूँ तो I really like this formula. I think कि जो 1% of hyaluronic acid sunscreen है ये formula इसकी काफ़ी क्लोज है. Of course definitely not same, but इसका formula काफ़ी सिमिलर लगता है. ये बहुत easily स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई वाइट कास्ट नहीं है, बिल्कुल भी टैकीनेस मुझे फील नहीं हुआ. सो या आई रियली लाइक दिस सनस्क्रीन. अब जो इसमें इन्होंने बोला है कि दिस इज़ गोना हेल्प यू विथ पोर मिनिमाइजिंग, आई कांट टेल दैट बिकॉज मैंने इसको उतना ज़्यादा कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं किया है. एंड पोर्स को श्रिंक करना या पोर को मिनिमाइज़ करना इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ये सिर्फ 10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में तो नहीं होने वाला है. सो आई कांट टेल अगर ये पोर्स के साथ आपको हेल्प करता है या नहीं, बट इट दिस डेफिनेटली वर्क्स ग्रेट व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज. So my experience with this sunscreen was really good, but the only issue that I had with this sunscreen was when I reapplied this sunscreen after a few hours. So when I applied this sunscreen for the first time, तो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो प्रोवाइड करती है और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, एब्जॉर्ब भी हो जाती है स्किन के अंदर. बट when I applied this after 3 to 4 hours, like the reapplication वाला टाइम, तभी ये मेरी स्किन के ऊपर थोड़ा पील करने लग जाती है. सो आई डोंट नो व्हाई डज दैट हैपन, क्योंकि ये नॉर्मली पीलिंग नहीं होती है एंड द पीलिंग थिंग डजंट हैपन एवरी सिंगल टाइम. सो इट माइट बी बिकॉज ऑफ द मॉइस्चराइजर और एनी अदर सीरम दैट आई एम अप्लाइंग. आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर अगर वो सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब मैं इसको फर्स्ट टाइम लगाती हूँ इट डज नॉट पील, बट जब 3-4 घंटे बाद लगाती हूँ इट स्टार्ट्स peeling. So yeah, that is a little bit off. Other than that, this sunscreen is amazing, super lightweight, gonna work for all skin type, fragrance free formula, so all the great and amazing things you're gonna get with this sunscreen. So I'm gonna rate this sunscreen a good 8 out of 10. Alright you guys, so that was my review about all these sunscreens. My review was
completely honest, and I really hope you guys found this video helpful. अगर कोई भी question है, कोई भी query है about these sunscreen, you can ask me in the comment section below. I would definitely reply to you guys. And yeah, that is what I have today for you guys. I will see you guys very soon in my next video. Till then, stay safe, stay at home. I love you guys all so much. Bye.